Assalamu alaikum. This is Crypto PNL, and we're going to see what is happening. Bitcoin finally manages to put a low, sort of एक low BTC ने बनाया है, and that's low on the Binance chart is 20,846. Uh, my personal opinion is that this doesn't look like a low, but yes, we have a top here, we have a top here. So not now, there has to be a base here. Low बनने से पहले price usually hit to certain levels, कोई level होता है जिसको hit किया जाता है. So still I think BTC manages to bring it मतलब वापस 20K तक आ गई है, which is very rare. Or it is not a good chart. These three candles are, I remember their resemblance to that move. This is a start of something, not the end of something. This is what we have. What is the common thing about this one? What is the common thing? अगर कोई बता सकता है तो ज़रूर बताए, कि आप सोच ले अपने दिमाग में. मैं 1 मिनट देता हूँ, सोचें. What is common in this move and this move? किसी को समझ आया? Well, the common thing is that this consolidation, this is where they have piled all the longs, all the shorts. They pile the shorts and they drop the market. जो कि मैं डिस्कस करता हूँ. What I discuss, an up move before a down move. This is the move there they creates, यानी यहाँ लोगों को they try to try to understand this whole market is about trapping, nothing serious about it. The whole market moves around traps. ट्रैप किसको करते हैं यूजुअली? जो व्हाट दे डू यूजुअली, जो मैं देखता हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, दे ट्रैप फेक ब्रेकआउट करके प्राइस को अचानक नीचे ले आना. जो पैटर्न में ट्रेड करता हूँ, फेक ब्रेकआउट करके मतलब ट्रैप करके लोगों को ऊपर ले जाना. सो दिस इज़ व्हाट दे डू. और उसके बाद ये क्या करते हैं, दे ट्रैप पीपल हेयर, और उसके बाद इस जगह तक जाते हैं जहाँ तक उनके स्टॉप लॉसेस हैं या जहाँ उनको मैक्स पेन है, और उसके बाद वापस आ जाते हैं. एवरी टाइम दिस हैपन. दिस इज़ द मार्केट गेम. मार्केट यही कर रही होती है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रैप कब बनता है और कैसे बनता है. सो हेयर इसमें भी यही चीज़ कॉमन है. दे कंसोलिडेटेड हेयर. तो अगर हम कॉमन मतलब मैं अपनी नॉर्मल उससे समझूं, I took a short here and it's the same short that worked for me, looking for this fair value gap and then price break into it, and now it is going towards these equal lows. So the narrative is that के price ने, that's the buy side, buy stops triggered, trap, same old story. Look at this, क्या हो रहा है यहाँ? Price came up, came down, went down, trap people, and now what they're doing, they're coming back to this area. Probably इधर तक ही profit taking होनी चाहिए. So let's go back to this. So this consolidation resembles to this consolidation. So what do you think is going to happen as per the trap rule? Let's bring the trap rule जो मैंने अभी आपको समझाया है. Just this is the trap rule. What they do, they create this and then they break out, fake breakout, और इस breakout पे they trap people. यानी ये जो leg up होती है, they trap people and then they force drop it to that level. उस level तक आते हैं जहाँ से उन्होंने previous कोई trap move बनाया होता है.
and this cycle repeats. So what do you think is going to happen? In my opinion, अगर हम trap rule को समझें, so if I understand the trap rule, and if trap, this is the low and this is the high. So what do you think? Where the price is magnetizing, where it can come in coming months or years or days. और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्राइस का इतना क्लीन होना, दिस फेयर वैल्यू, these spaces, इतनी खूबसूरत कैंडल्स, look at these gaps, look at these gaps, look at this, one is almost filled, look at this gap is almost filled, almost. So do you think कि ये इस गैप को फिल करने के बाद इस गैप को रहने देंगे? आई थिंक अगर ये मंथली कैंडल इस लो से नीचे क्लोज होती है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस एरिया टू बी ट्रिगर्ड, और ट्रैप मूव के मुताबिक व्हाट दे गोना डू एज पर द रूल, एज पर द ट्रैप रूल, दे गोना कम हियर, टेक दिस आउट, एंड देन trap people here and go back here, trap people here, same old thing. Maybe they'll make a new high and produce more because इनको नीचे आने में they need a reason to come down. Example. So keep an eye on this order block. This is the only order block you must be looking at, in my opinion. In my opinion, this is the very critical order block. And this 12K, and look at, and why this order block is important, because ये जो कैंडल ड्रॉप कैंडल है, दिस इज द रेजिस्टेंस. जब भी बीटीसी ऊपर आया, दिस इज द रेजिस्टेंस बीटीसी ने हमेशा फेस की है. क्यों ये इतनी रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है? और हमारा रिटेलर कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट वी सी, आपको रिटेलर कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ. रिटेलर कॉन्सेप्ट ये है, व्हाट इज द रिटेलर कॉन्सेप्ट? रिटेलर कॉन्सेप्ट इज ये कि when price breaks a resistance, they can come back to revisit it, and then they make a new high. So this resistance move is, मतलब इसको हम कहते हैं SR flip, support resistance flip. We call it SR flip. So keep an eye on this one. So this area, if the recession is on, मतलब अगर recession इस हमारे यहाँ अमेरिका में और over the world is on, so look at this is the area of resistance. आप अगर गौर करें तो ये वो एरिया था जिस एरिया ने सबसे ज़्यादा रेजिस्ट किया प्राइस को. People might call is 10K, but I think this area, the high or the close of it, because it has the more volume, we can produced it like this. हम यहाँ भी कह सकते हैं $10,000. So don't you think so, as a retailer mentality, it has to come down and then it has to go back? This is the perfect SR. So I'm just building a case that if we have still हमारे पास 16 days हैं, so keep an eye on this stupid level, और price ये नहीं है कि एक ही कैंडल में आ सकते. You can see that हम एक कैंडल और ऊपर की देख सकते हैं, उसके बाद हम नीचे आ सकते हैं, लेकिन एक बेयर मार्केट का सिनेरियो बन सकता है. और बेयर मार्केट जो है, मेरे ओपिनियन के मुताबिक, मेरा ओपिनियन ये है कि जब बेयर मार्केट ज़्यादातर तब स्टार्ट होती है जब मंथली मार्केट स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो और वीकली मार्केट स्ट्रक्चर 2 दफ़ा ब्रेक हो जाए. नॉर्मली बेयर मार्केट कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होती है, बेयर मार्केट जिसको हम कह सकते हैं. सो इट लुक्स लाइक कि अगर ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, सो दिस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, दिस 28 के, अगर ये कैंडल समहाउ ऊपर क्लोज हो जाती है, तो दिस इज़ व्हाट. इसलिए कीप एन आई, क्योंकि ये मैं आपको बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ. जब तक ये कैंडल ऊपर नहीं क्लोज होती, या जब तक कि कैंडल क्लोज नहीं होती, अपना बायस ना बनाया करें. जैसे कि ये कैंडल है, सी, अपना बायस ना बनाया करें. लेट द कैंडल टू क्लोज फर्स्ट, ऑलराइट, then build up your bias. Okay, so I hope you got my point. Like इस तरह की candles, so we must be ready for that for candle session. अब example दे देता हूँ. ये Dow Jones है, और look at this chart, and what do you think?
what is this chart is doing? This chart is creating, अगर इस block से reaction नहीं होता, I think it has to come here, and I think it will come here. At least this area is important. Everybody, every mom and dad and papa and mama is going to long this area, but I think it has to come down here, because that's how they trap people. They're going to trap and then they go up. Remember that thing. I think, in my opinion, it's Mamura. DXY really inspired me and impressed me. I was not expecting to hear high break hoga. So on the weekly scale, it is going up, but this up move looks pretty nice and decent. But I'll be very cautious here because we are above a high, and then we break down like we see niche, and then we are going up. So it is kind of not my kind of a setup I'm looking for. Yield setup, um, you know. So we have to wait. इसीलिए कहते हैं short तब तक ना करें जब तक market structure break ना हो. And look at this Microsoft. Microsoft not showing anything good here. और ये जो move है ये resting liquidity है. This whole move is a resting liquidity move. This whole move. I think ये जो पूरी move है it is going to be get triggered, and I think we are coming here because these candles are pretty decent. It is, yes. So I'll make another video and tell you the importance of FA and TA. If you want to learn this, what is the importance of FA and TA? What is this? I'll make a separate video on this. FA fundamental and TA technical. Okay, ये दो चीज़ें हैं जिसके बारे में people probably confuse करते हैं. तो what I have observed, and मैं अपना idea share करूँगा आपके साथ. What is FA, what is TA, and what fundamental analysis, the importance of fundamental analysis, and what is the importance of technical analysis. वैसे मैं जनरल बात करें तो जो fundamental analysis होते हैं, this gives you the direction of the move, and technical analysis gives you the position, where to enter, where to exit, what is your strategy, where is your stop loss. So जो market का जो direction है, they gives you the direction. अब fundamental में आपको कौन सी चीज़ें आती हैं, this is what we have to focus on. उसके बारे में मैं अपना एक जनरल छोटा सा लेक्चर आपको तैयार कर दूंगा. आप उसके बारे में पढ़ें, डिस्कस करें कि हम फंडामेंटल से मार्केट स्ट्रक्चर्स क्यों टूट रहे हैं. सो फंडामेंटल टेल्स यू, आई रिमेंबर बीडीसी का चार्ट देखकर आपको, ये वो दिन था, दैट वाज द डे जब फेड ने इंटरेस्ट रेट ड्रॉप करके क्यूई स्टार्ट किया था. उसके बाद जो ये पीरियड हुआ था, ये इकोनॉमी की हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट रिसेशन हुई थी. आई थिंक 3 to 4 months की, इससे भी कम, फास्टेस्ट कोविड में जब हुई थी. एंड देन ईजिंग की थी, एंड देन प्राइस वेंट अप. और अब क्या कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग से दे आर गोइंग फॉर टाइटनिंग की तरफ, एंड दे स्टार्टेड फ्रॉम नवंबर, और उसके बाद देन वी हैव दीज ड्रॉप्स. बट दिस गिव्स यू डायरेक्शन कि अगले फ्यूचर रिस्ट्रिक्ट मतलब इन कमिंग डेज एंड मंथ्स what is going can happen. So apart from building the longs, you must look के profit taking शुरू कर देनी चाहिए. It is everything is new about it. Tesla को देख लें आप, strong fundamental है इसके पीछे. What is happening here? In my personal opinion, they created this leg up to pile their shorts. This kind of a move at highs in the middle of the range, for example, अगर आपकी रेंज के दरमियान में इस तरह का मूव हो, it does matter. लेकिन this same old story, they trap people here. If I'm right, what we have to wait when they are going to take out this low, or they have taken this low as already. And if they took this low,
If they took this low, they are going to short with all the money, with everything in these recessions, and this is going to go very low. Like Amazon का आपको chart में दिखाता हूँ. Look at this Amazon chart. What they're doing, topping pattern, they're coming down, and this was where the Amazon bubble burst. Look at this chart. Do you think a BTC just, अगर हम example ले लें, BTC just get out of that low, उसके बाद हम यहाँ अगर consolidate करते हैं on monthly level, we can have another leg. So I'm just telling you it can happen. Don't go in early. Let this market to decide. कोई ज़रूरत नहीं है early buying की. आप अगर, if you're buying, even if you're buying, what if I say आप बाय करेंगे. देखिए स्नैपचैट, मैंने इसका पहले भी देखा है, इस कंपनी का देखिए कहाँ जा रहा है. इट्स बीन फॉलोइंग, और आप देखें वेयर इट इज कमिंग. इट इज कमिंग टू द लेवल वेयर इट स्टार्टेड. तो ये चार्ट आपको ये शो कर रहा है कि मेजॉरिटी एसेट्स उस लेवल पे जा रहे हैं जहाँ से स्टार्ट हुए. स्नैपचैट इज नॉट अ बैड कंपनी. दे एग्जिस्ट, दे हैव हमारी मीम कॉइन, स्टूपिड डॉज कॉइन, शिप कॉइन. डू यू थिंक इनका कोई केस है? दे आर द स्टूपिड कॉइन्स. 90%. उस लिंक कॉइन को देखें, ऑरेकल कॉइन्स. डीफाई कितने खतरे में है. ये सेल्सियस का जो प्रॉब्लम हुआ है उसके बाद डीफाई इज इन डेंजर. Stupid coin, stupid danger. So don't trust these um, crazy people telling you that we are going towards again to the upside. Yes, if we are going to the upside, मैं late हो जाऊंगा पार्टी में, लेकिन I'll wait. कोई ज़रूरत नहीं है बॉटम कैच करने की. बॉटम से बेहतर यह है कि 25% मार्केट पंप हो जाए, उसके बाद कैच कर लें. सो बी केयरफुल. अगर BTC इस स्टेज पे है, I'm saying that, I'm just creating. If BTC is at this stage, brothers and sisters, this can happen. I'm not saying कि it will happen. ये जो इंटरनेट मनी की जो स्केसिटी है ना, जिसके बारे में कहा जाता है स्केसिटी है. Where is the scarcity? Look at this. I'll show you. What is the name? Coin market cap. Look at this. Number 2 coin, Ethereum. What is the name of this coin? Ethereum. Do you do the? Can you see that circulating supply? Total supply. Where is the max supply? Number 2 coin. This guy can make enormous amount of money by printing more ETH. I don't believe in this. I can understand they have this burning process or whatever they do with this decentralized stupid things, but still, this internet money or internet thing जो ये है, they can, ये जो इसकी जो scarcity के बारे में कहते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, they can print as much as you can. So how do you trust? We are trusting this guy, Vitalik. हम इस नमूने के बारे में, हम इस, sorry, we are trusting this guy. Huh? This is the guy we are trusting. Huh? On this, everything is dependent on this guy. At least, I'm not saying he cannot do it. He's a good genius programmer. But is he the one? वो पहाड़ी पे खड़े होके कोई कहे ना कि मैं गवाही देता हूँ, मैं अगर मैं आपसे कहूँ कि उस तरफ दुश्मन आ रहे हैं, तो क्या आप वटैलिक के ऊपर यकीन कर लेंगे? वटैलिक पे यकीन नहीं कोई कर सकता. वो हमारे नबी थे. तो समझने की कोशिश करें, उनकी एक इंटेग्रिटी थी. पूरा कुरैश का कबीला उनके ऊपर यकीन रखता था कि वो सादिक और अमीन है. सो दीज काइंड ऑफ गाइज, और उस मतलब एक इमोशनल बात है, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड. दे आर नॉट सादिक और अमीन और एनीथिंग एल्स. ही इज जस्ट अ नॉर्मल प्रोग्रामर. ही हैज़ अ स्किल, अल्लाह की देन है, ही मेड इट. बट विद दिस स्टैट्स, डू यू बिलीव इट? $145 billion. I'll be very careful with it. So remember that thing. I'm not trying to be. मैं कहता हूँ इनके ड्रॉप होने का कोई भी लेवल हो सकता है. Don't trust these guys.
नेवर ओवर एक्सपोज योरसेल्फ, लीस्ट पॉसिबल लेवल पे बाय करें। सिंपल रूल आपको, मेरा जो रूल ऑफ थंब है, अगर ये स्नैपचैट का चार्ट है, एग्जांपल देता हूँ, ये स्नैपचैट का चार्ट है। इफ़ यू वांट टू बाय, फॉर एग्जांपल ड्रॉ टू लेवल, फॉर एग्जांपल ये वेव हो चुकी है, यहाँ तक हो चुका है और आपने बाय करना है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाय द स्नैपचैट, ये हाई है, ये लो है, आपने बाय करना है। वेयर यू गोना बाय, ये सिर्फ दो लाइनें लगाएं एंड आप अपना ये रिट्रेसमेंट टूल पकड़ लें, उस लो से लेकर उस हाई तक आप मैयर कर लें, इस 50% से नीचे बाय कर लें। 10, 15, 25, 30, ये है वो लेवल जहां से आपको बाय करना चाहिए। दिस इज डिस्काउंटेड लेवल, दिस इज प्रीमियम। प्रीमियम पे आप खरीदेंगे कि सस्ता खरीदेंगे, यहाँ खरीदना है। किसी भी मूव को, एग्जांपल देता हूँ, लेट्स पुट इट आपके सामने, ये लें जी, सेम ओल्ड थिंग। अगर आपने मूव मिस कर दिया, ये हाई है, ये लो है, व्हाट आर यू गोना डू? अगर आपको बिलीव है कि वो उसने ऊपर जाना है, मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट है, सो वेयर वुड आई वुड लाइक टू बाय, 50% से नीचे यहाँ बाय कर लें कहीं भी। ये मेरा बॉक्स है एंड लेट्स सी द मैजिक। आप देख लें मैजिक, और आप मैजिक देखेंगे 50% से बाउंस एंड वी आर गोइंग अप। आप अपने प्रीवियस चार्ट के ऊपर ये बैक टेस्ट कर लें। आई कैन मेक यू रियलाइज के एटलीस्ट 70% से ऊपर सक्सेस रेट होगी। दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज हाउ एल्गोरिथम वर्क्स, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।